preparing for the SSC examinations. One second, Asal. You are preparing for SSC examinations. SSC examinations. So two different angle. Is it your backup things? Yes, sir, because of Your second. family. So that's great. But right now you should most focused on these things because SSC have the many options, many exams that the government conducted in 1 year. You can for the SSC different states you can Yeah. prepare for that. But for these things, if your passion become your profession, that's the that's the fantastic things that happen. That should happen. It should happen, basically, if you are dedicated towards it. I have seen your works before, without going any film schools and that things. I have seen you a few images you have shared, no, right? Yes, sir. Uh, some festivals images that you have sent, right? Yeah, and an art exhibition. Any art exhibition photograph. Yeah, so you have that kind of sense without going anywhere, without knowing many more things. You are assisting something. So that's your passion. That's why things happen. So I thought, and I suggest just focus more on it. Say how you prepared for this exam. I'm not asking for the time slot, ke how much you read, how much you study. I'm just talking about what the way in which you are preparing for it. Uh, Sir, I am preparing notes mainly for the MCQ part because general knowledge is a little bit tough for me. There it's a vast subject, so I'm giving more focus on that. And uh, on cinematography basis, I'm studying your classes and other sources from YouTube and such. No, the first thing, say, Gautam, are you there? Yes, sir, I'm here. Okay, yeah, Gautam. So what I suggest, instead of observing other people how they explain the things, how how people explaining the basically I'm talking about the films and whatever you wanted to write about the scene. It's all about what they wanted to know in examination. Even in the examination, the interview, what's your aptitude towards this particular things, how you see those elements, right? And what you are thinking about it. So if you go anywhere, you have listened on some YouTube channels, you heard the interview of directors and cinematographer. So what happened? You just made a perception towards certain films, towards certain camera movement, towards certain stories, right? But what I suggest is, because this is just the examination, because you are not you are going there to become professionals, right? So you are a bit amateur, so that thing should be reflected in your examination pattern. So if you think like that, ki kahin se YouTube say you have heard about those things, right? You have listened many things, many interviews and that kind of things, but when you are explaining any scene or anything, just be yourself. Ki what you are thinking about that particular thing, just explain only those things, right? Technically, if there's a technical questions, there will be a certain answer, right? But if it's the logical, right, or any scene analysis or film analysis kind of things, right? So at that point of time, don't go with the Googles, don't go with the YouTube, don't go with the director's point of view. Whatever you are thinking about it, right? Just explain those things only. Just write those things only. And for that reason, you must have to watch many films, right? बहुत सारी फिल्में हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी and you have to make notes on it. कि when you started watching, since I think you guys are preparing for FTI, I think every week at least you guys have to watch 2 or 3 films, and you must have to make notes on it. So क्या by end of the day, after 30 days or 4 weeks, you have 15 films, right? 15 films means at least if you are making notes of each films have the 10 notes or 5 points or 6 points or 10 points, right? On an average, if it will be the 5 points, at least by the end of the month, you have 60 points about that particular films. The films के बारे में you have
60 points. Maybe the 10 points of the camera movement, 20 points about the lightings, 20 points about the color scheme, right? So these things will, but it should be, it's not like that ki within 1 week you just watch 10 films, right? Make it in your habit that in a week I will watch that numbers of films, three or four, right? So that will help you out. I know. And Gautam, have you applied for 1 year? Yes, sir. Okay. And Vedant, you? Tomorrow, sir, tomorrow is only for the television wing is happening. The exam is for, Tomorrow or day after tomorrow it oh, is? sorry, day after tomorrow. Day after tomorrow. Day after tomorrow. It's day after tomorrow. Yeah, it's Yeah, yeah. only TV Wings exam. It's for yeah FTTI's TV wings and Only 2023 FTI. years batch. Yeah, the things is that in So they have said that there will be another exam will be also conducted with the jet. yeah, obviously. The reason is in 2022 or 23, I think, one batch was the zero batch because of the COVID, right? They didn't conducted exam for that. So that's the reason they have to fill up the criteria because it's a government funded, the institutions. So जो उनका चल रहा है, according to that, they have to make it out. So JET maybe फिर again they will you just conducted that exam also for the TV wings and for SRFT and FTA both things because for the TV wings SRFT have the 2 years course, right? Yes, but tomorrow's day after tomorrow's exams for FTTI one. Only for FTA, only for FTA. Yeah. It's only for the FTA. So Vedant, you have applied it? Yes, sir. So what? Oh, yeah. Yeah, that's great. So that's what I'm asking. Abhi, आप लोगों ने have you seen the previous year questions? Yes, sir. देखा है? Which kind of question is it? It's very simple questions. It's very simple question in MSQ, multiple selective questions जो आपके हैं. It's very simple and technical questions that we have already discussed, I think. Shutter, ISO, aperture, exposure meter, right? So I thought ki MSQ is, if you guys have seen those questions, it's very easy to solve, right? देखा है सबने? Yes, sir. है ना? So I think that part is easy, and whatever notes that I have given it to you, and there is no such details of it कि बहुत detail में नहीं जाना है. Only if you read about the sensor, that okay, don't go with the CCD, CMOS and Foven sensor, XMOS sensor. Don't go too much in details. उतना नहीं पूछेगा इसमें. I'm talking about the 1 year only. 1 year और मैं MSQ की बात करो. That is your domain specific question. 1 second, just give me one. Guys, is anyone writing day after tomorrow's exam on Chennai? No, So bro. I'm from Mumbai, Okay. answering in Mumbai. What happened, guys? Uh, who is asking for Chennai? No, sir. I just asked. Oh, It's there, simple there, question. there was a one guy. I'll ask him. It's called Sathya, who is from Chennai. Gautam. Oh, okay, okay. Sathya was from Chennai. He'll- Oh no, the other guy joined. Shivam. Sure. Yes, sir. Okay. So are you appearing for 1 year? No, sir, I'm preparing for the 3-year course. So you guys must have to, fill up the form at least and conduct the exam. So at least you know the how to, answer, how to get prepared for it.
And at least you got to know the time management, right? The way. So the forms are not out yet, right? No, no, I'm talking about the 1 year. Okay, okay. I'm So talking you're about the 1 year. suggesting we to answer the 1 year term also? Yeah. Are you suggesting that we should Yeah. answer the 1 year. 1 year? But I'm just no, not for the suggesting. Look, it's also for the 1 year, the same things for the 3 year, right? Yeah. It's nothing like But this. it's You for observe television, right? If I'm not wrong. which one? 1 year. The 1 year course, yeah. The One forms year are out question for only. more about the television, more about the Yeah, television. But the one question that is 20 marks, no? The one yeah, yeah, questions. Okay, yeah. one more thing. Read whatever the instruction carefully. There are Okay. 7 questions, right? It's also applicable for the 3 years, guys. In 3 years, also in subjective, there was a 7 questions, but you have to answer only four, right? There is a 7 questions, but you have to write only four. The 50 marks question it is, right? So three question have the 10 marks like that, and one question is 20 marks, right? So question number one, you have to answer. It's not like that there is a 6 questions, so you can write the answer of four, five, six, and two. You must have to answer question number one. So read it carefully. There's instruction. You have to answer the question number one. Even in the TV wings, even in the 3 year questions. जो पहला क्वेश्चन है 20 मार्क्स यू हैव टू आंसर इट उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आइदर और कि यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 so you have to answer question number 1 so if you have seen the like this one TV wings questions 20 marks questions again it's the same things it's all about the observation वो किसी ने last time I think we have discussed a bit on it I think शिवम या किसी ने पूछा था the sabji market scene right. They write the 5 visuals of vegetable market early in the morning or something like that. That was in the 20 marks question, and you must have to answer it. I know. But before going on subjective part, let me explain a few things for like because MSQ is a bit easy. अगर तुम देखोगे 2 साल के questions bit easy, it's easily you can answer it, right? For the MCQ, it's not too difficult if you are reading newspaper and whatever the daily news kind of things. अगर वो तुम 2 महीने से पढ़ रहे हो, again it will become easy. But few things, few technical things that you should remember कि जो ब्रॉडकास्टिंग टर्म्स है ना व्हाट आर द ब्रॉडकास्टिंग टर्म जैसे कि हम बात करते हैं लाइक AC, DC, ADC, right? कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर दैट काइंड ऑफ थिंग्स मल्टी कैमरा सेटअप CU क्लोजअप वर्ड्स तो जो एब्रिविएशंस हैं और ऐसे जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ना द शॉर्ट टर्म शॉर्ट फॉर्म्स वो थोड़े से आप लोग देख लो वो कहीं ना कहीं मैं 2 साल 3 साल के क्वेश्चन से फिर देंगे इट यू कैन सी ऐसे कुछ टर्म्स पूछते हैं है ना तो जैसे कि आपके मतलब ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड वॉट एवर बिकॉज इट्स अ टीवी विंग्स क्वेश्चन ऑब्वियसली जो ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड एब्रिविएशंस हैं maybe they can ask or I think previous years they have already asked few questions so कहीं से भी उठा लो कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा कहीं पर भी मिल जाएगा so whatever technical words that is related to broadcasting you can write it down और थोड़ा सा पढ़ लो उस 2-4 मार्क्स के क्वेश्चन वो इजिली आ जाएंगे ब्रॉडकास्टिंग के जो भी एब्रिविएशन है 2-4 क्वेश्चन एवरी ईयर्स दे हैव कीप आस्किंग है ना और एक चीज था आपका हाँ 1 सेकेंड one more thing you can read about the ministry not the whole ministries जो कि FTI को फंडिंग करती है लाइक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री जो दूरदर्शन को फंडिंग करती है राइट दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू जस्ट रीड अबाउट इट उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि Yes, दूरदर्शन के लिए कौन सी sir, it या was in the prospectus. It was the information was there इन about इन the विच FTT prospectus. This current exams prospectus. The about ministry and the uh, who is just the read that's a good thing just read about if there's a prospectus read those things yeah. how they are funding FTI, which ministry is funding FTI. So you guys can read that. So maybe they can ask those questions. Because if you are preparing for those things, उससे related questions वो पूछ सकते हैं. है ना? Again, a few more things for the literatures and award. कि 2022, 2023 में जो भी the big awards in terms of literature
जिसको भी मिला है, खास करके अगर इंडियन है कोई, सो रीड अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो। वो एमसीक्यू में आ सकते हैं, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस मे बी दे कैन आस्क कि लिटरेचर से, थिएटर से ज्यादा रिलेटेड आ सकते हैं, फिल्म से बहुत कम आएगा। थिएटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर, लाइक द रिलेटेड टू द एनएसडी, दैट काइंड ऑफ थिंग्स, जो है ज्ञानपीठ अवार्ड, बुक्स, और मतलब मूवी दैट इज अडेप्टेड ऑन द बुक्स, कोई थिएटर और प्ले, राइट, दैट काइंड ऑफ थिंग्स, ये सबसे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। सो थोड़े बहुत जो है एमसीक्यू का आप वहां से उठा के देख लो। हु गॉट अवार्डेड इन 2022 टू 2023, उसके जो है, अभी कौन सा गेम हुआ था, कॉमनवेल्थ था अभी जो हुआ है 2023 में, क्या था ये, कॉमनवेल्थ नहीं यार, अभी दिल्ली में जो हुआ था क्या था यार, Asian शिवम, Games. इस नहीं, एशियन गेम्स नहीं था, अभी जो हुआ है यार, जी नेशनल जी गेम्स। जी जी G20 था ना, G20 समिट था ना अभी। हाँ G20 ही तो था, हाँ G20 ही था। उससे रिलेटेड आ सकता है कि होस्ट कौन कौन थे, कौन कौन से कंट्री आए थे, बिकॉज जीके में तो वही होगा आपको, है ना। सो लिमिटेड है इसके क्वेश्चंस, एंड आप अगर सब्जेक्टिव की बात करोगे तो इट्स मोर रिलेटेड टू टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। सही कहा था उसने कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टेलीविजन से रिलेटेड है। तो कुछ जो फेमस शोज हैं, जैसे कि काइंड ऑफ मालगुडी डेज, राइट, यू गाइस हैव एवर वॉच्ड दोस काइंड ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम और ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स, देखा है कभी? कोई प्रोग्राम्स, एक कोई भी प्रोग्राम चुन लो एंड वॉच दैट एपिसोड्स, फ्यू एपिसोड्स एट लीस्ट। परसों एग्जाम है, कल देख लो मालगुडी डेज के, देख लो किसी और एपिसोड के, देख लो मे बी, या अभी जो कुछ चल रहा हो कोई ऐसा एपिसोड उसका देख लो। मैं राइट नाउ द थिंग्स इज इन लाइक, जो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, इट्स नॉट द ब्रॉडकास्टिंग थिंग्स, बट मे बी दे कैन आस्क अबाउट द पॉडकास्ट। अभी पॉडकास्ट मार्केट में बहुत ज्यादा वो हो रहा है, राइट, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत और रिसर्च कर लो, है ना, हो सकता है किसी के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते, राइट। कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म छोटे छोटे हो वो देख लो, है ना, बिकॉज आई थिंक टीवी विंग्स में, नॉट 2022 बट बिफोर 22, आई थिंक 19 में क्वेश्चन आया था कि राइट अबाउट द एनी टीवीसी कमर्शियल दैट यू वॉच्ड, कि कमर्शियल के बारे में पूछा हुआ है, कि टीवीसी के बारे में पूछा हुआ है, कि कोई एड फिल्म के बारे में लिखो आप, और अदर किसी एक सीरियल या किसी एपिसोड के बारे में लिखो दैट यू लाइक द मोस्ट, और अदर द पर्टिकुलर सीन था जिसके लाइटिंग अप्रोच के बारे में लिखो। आई थिंक 2020 18 में था, आई थिंक 2018 में था, 18 में था, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कोई एक टीवी का प्रोग्राम जो आपको अच्छा लगता, कोई प्रोग्राम, आइदर यू वॉच इन योर चाइल्डहुड, ऐसा नहीं को रिसेंट, मे बी दे कैन आस्क रिसेंटली वॉच, ऐसा नहीं कहेगा कि जो अभी चल रहा है रिसेंटली ऑन एयर प्रोग्राम्स, नो, मे बी द प्रीवियस प्रोग्राम दैट दे कैन आस्क, जो काफी जो चलने वाले प्रोग्राम्स हैं, लाइक टीवी के सबसे ज्यादा चलने वाले कौन से प्रोग्राम्स थे जो हमारे टेलीविजन पे चले हैं? Ramayan. नो नो नो, गोविंद निहलानी का एक सीरीज था यार, कुछ दमक और कुछ, गोविंद निहलानी ने का एक, मैं भेजता हूँ नाम उसका, काफी पॉपुलर सीरियल है, तो वेरी पॉपुलर सीरियल सीरियल इट इज, राइट। तो उसके बारे में कर सकते हैं। तो राइट नाउ मेरे पास एक वो है कि हम इस पे डिस्कस थोड़ा सा कर सकते हैं, जो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. चलिए, अच्छा, बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस वन, जस्ट बिकॉज अभी क्लासेस वाले नहीं है, बट यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी लेटर, सूनर और लेटर मैं आंसर कर दूंगा आप लोगों को, उसमें कोई वो नहीं है, because for the like 3 years JET exams, as I told you earlier, I think सबने ज्वाइन नहीं किया था, so when the form, अभी भी तुम लोगों के पास, you guys have 2 months at least, अभी 2 महीने हैं तुम लोगों के पास, because the previous year's pattern if you are noticed, जब फॉर्म आता है उसके बाद एटलीस्ट 45 to 60 days you have time, है ना, उतना टाइम तो होता है, तो you guys have enough Sir, amount of time। हाँ, या uh, what time for the next jet you are saying? a jet, whenever, maybe March end, maybe they will declare. And after that, you have, when they declare the date of form, right? Oh yeah. Issuing of form. तब I से think लेके after these examinations and the maybe next week we mid can of expect. March, mid of March, maybe the end of March, maybe. But what I'm talking about, after the declaring the date of
like the examination form, right? तो एग्जामिनेशन फॉर्म से एग्जाम के बीच के देयर विल बी 45 days डिफरेंस. इट्स सर नॉट लाइक लास्ट दैट ईयर दिस तो इज. फरवरी में आया था फॉर्म्स एंड देन मार्च में एग्जाम हुए थे ना। डेट देख लो, कम से कम 40 days होगा. तो सो इज फरवरी इट में 3 या 4 पॉसिबल को सर आया था अभी? कुछ, और मार्च एंड में कुछ एग्जाम था ना. हाँ, सो इज इट पॉसिबल सर अभी नेक्स्ट वीक फरवरी या फिर लास्ट वीक फरवरी में आ जाए और मार्च में एग्जाम हो? लास्ट वीक में नहीं आएगा, बिकॉज इसके पेपर्स भी तो चेक करने हैं यार. ओके ओके सर। they look, government bodies है ना, they will not outsource the things, no. They also have to make questions and everything. They have certain amount of the people. वो बाहर से outsourcing नहीं कर सकते. What I think कि बिकॉज ये एग्जाम कंडक्ट होगा, इसके पेपर जाएंगे, एक ही सेंटर पे चेक होता है, कहीं बाहर नहीं भेजा जाता है. वो उसी जगह पे चेक होगा, तो ऑल द पीपल विल बी देयर जो वहाँ चेक करेगा. सो मे बी आफ्टर दैट दे विल डिक्लेयर, बिकॉज क्वेश्चन भी तो बनाने हैं, वो भी करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं. सो मे बी मिड ऑफ मार्च, मतलब जो मेरे सोर्सेज जो मैंने पता कि उससे मैं बता रहा हूँ, बिकॉज मेनी ऑफ माई स्टूडेंट इज इन FTI राइट नाउ. सो वहां से जो मैंने पूछा है, मिड ऑफ मार्च मे बी. सो अप्रैल लास्ट तो चला ही जाएगा तुम्हारा एग्जाम, तो नो डाउट वो तो जाएगा ही जाएगा, नो डाउट. बट ये क्लियर है कि फॉर्म आने के बाद एटलीस्ट यू गाइस हैव 30 to 45 days. फॉर्म आने के बाद भी रहेगा, उतना टाइम आपके पास होगा टू प्रिपेयर इट. सो नो वरीज फॉर दैट. अभी टाइम मिल गया तुम लोगों को अच्छा खासा, है ना. सो हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था, एनीवन हैव एनी डाउट फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस, या किसी के कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहा है कि वी नीड टू डिस्कस ऑन एनी पॉइंट, कुछ ऐसा है? Sir, I have a question. या क्लास में. Sir, if they ask about the cinematography style of a particular cinematographer, what all या should we? what, one second, repeat it again and just get your mic closer to you, ना, थोड़ा सा वॉल्यूम कम आ रहा है. Sir, if they ask like write the cinematography style of any of the cinematographers, so what all should we consider writing? Right, in terms of cinematography style, right? So what do you mean by a style? What you understand by a style? Everyone have the camera, everyone have the lens, right? What is the style is? Uh, like maybe they will use long shots or you know. But if is it in depth, that's the call of director, right? Sir, Yeah. something which he is repetitively using. That's the long take, the framing, this kind of things is the call of director, right? अगर Yeah. उस pattern को, if you think about that pattern, that's a call of director, because director give you the script. On that script they mention it will be long take, it will be panning or kya, whatever you have to follow the camera, following the character, either whatever the things is over there, right? Yeah. तो क्या होता है स्टाइल, क्या होता है सिनेमेटिक स्टाइल, क्या होता है? Let's learn Maybe about the the, yeah, maybe the lensing and lighting and stuff. lighting. Right. One point is your lighting approach. The one thing that is in the hand of cinematographer is lighting approach, right? कि how they lit up those things, right? The one thing जो होता है, that is lighting approach. How they are playing with lights, which kind of some of DOPs wanted very natural light, right? If you have seen like very natural light, some of wanted very artificial light to make it very glamorous, glorious light, right? Some are very artistic and very natural lighting things. Have you seen the differences in Santosh Sivan cinematography and the another DOPs? Have you watched the film of Santosh Sivan? Yes, sir. Have you watched the film Santosh Sivan? And the another DOPs movies that you watch? Have you watched the Ravi Chandran films? Yes, sir. Yeah. The things is that what you feel the differences in both in terms of approaches, in terms of lighting. Santosh Shivan's look more realistic and like in the ways of lighting.
Hmm. I mean, for Urumi and all, they have used much of the outdoor shoots and stuff. So there was more. I mean, he was So not the it, DOP, I think, but so that's the things. That's the things. If I'll let you know that one thing. That's the reason I'm keep telling you guys start watching films. Once look, you're listening music, right? Through the music, by hearing it many times, are you able to recognize it or not? This is music maybe done by the Rahman. Are you feeling that kind of things? Many times, many times maybe it will be wrong. Some another music director have produced that music, but there is a certain authentication Rahman music that you can feel. Does it happen with someone? क्या ऐसा होता है कि you feel that कि this kind of things is this music is from Rahman? Have you ever feel that? कभी Yes, sir, ऐसा we हुआ can है? feel it. Yeah, we You can can feel feel it. it. Why? Why? The reason is why it's happened. Uh, into music, I don't know how to figure it out, but we can feel it. You can feel it by Yeah, listening but those things. There is yeah, a listening. certain elements. There is a certain like music elements, right, or instrument that he used differently, right? Certain different kind of music, certain different kind of instrument that he used in his music, right? So that make him different from another one, right? वो उसको उससे different बना लेगा. तुम अब वहीं पर बादशाह के गाने सुन लो, वो भी गाने बनाता है, राइट? और उसकी म्यूजिक से ही समझ में आ जाएगा क्या बादशाह की म्यूजिक चलाते ही तुम कह सकते हो दिस म्यूजिक डन बाय ए आर रहमान? कह सकते हो क्या म्यूजिक बजते ही एक बार में कहोगे ये तो रहमान का नहीं होगा? कहते हैं ना, बाय वंस यू कैन से इट. द रीजन इज यू कीप लिसनिंग दोज थिंग्स, सो यू गॉट टू नो दैट. तुम्हारे कान समझ गए हैं कि किसका हो सकता है, किसका काम है. जस्ट लाइक दैट फॉर द विजुअल्स योर आई शुड लाइक दैट. When once you started watching films, don't get it only with the director point of view, because many times you guys have seen the films of Spielberg, right? Spielberg के बारे में क्या कहा जाता है? वन टेकर फिल्म्स होते हैं, लॉन्ग टेक होते हैं. लॉन्ग टेक के बारे में किसको याद करते हो? इफ आई आस्क यू फॉर द लॉन्ग टेक फिल्म्स, कितने फिल्म्स हैं जो लॉन्ग टेक वाले हैं या फिल्म मेकर्स दैट यू कम्स टू नो दैट काफी लॉन्ग टेक लेते हैं? स्पीलबर्ग के बारे में कहा जाता है ना, मेरी लॉन्ग टेक. यू गाइस हैव वॉच्ड फिल्म्स? नहीं तो कम से कम फिल्म देखिए उनके, यू गॉट टू नो दैट कि काफी लंबे लंबे शॉट्स होते हैं. जस्ट लाइक दैट वैसे ही कुर्सोवा के बारे में कहा जाता है कि उनकी फिल्म देख के तुम्हें समझ में आ जाए कि कैमरा इज वेरी स्टैटिक. वो जिमी जिप पे लेके नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट पुटिंग इट ऑन क्रेन, नॉट एनी काइंड ऑफ स्टेबलाइजेशन, बहुत डॉल इन नहीं है, जूम इन नहीं है, ट्रैकिंग नहीं है, कैमरा इज फिक्स्ड. देयर इज नो मच मोर मूवमेंट ऑफ कैमरा. कैमरा इज स्टैटिक. But there's a blocking, there's a movement of characters, movement of artist, movement of nature. In Kushova films, में any films if you can see, any films you can see, just कोई film उठा के देख लो. I start watching that films, you feel the camera is static. But it won't feel like a static. जैसे तुम न्यूज चैनल में या डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखते हो, स्टैटिक कैमरा में स्टैटिक फीलिंग आती है. You never for a fraction of second तुम्हें फील नहीं होगा कैमरा स्टैटिक है. The reason either the characters start moving, either हवा चल रही है, इधर बारिश हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा होते रहेगा दैट यू फील देयर इज अ मूवमेंट. सो दैट्स द अप्रोच ऑफ कुरशोवा. अगर ऐसा कुछ आप सीन में देखते हो, मैं कहीं भी ऐसा देख लूं इधर एनीवेयर, इफ आई वॉच दैट काइंड ऑफ थिंग्स, आई फील दैट दिस फिल्म और दिस सीन ये उसी का स्टाइल है, ये कुरशोवा स्टाइल है. वो फ्रेम को स्टैटिक नहीं रखेगा. देयर इफ एवरीथिंग इज स्टैटिक, इवन द कैरेक्टर्स, देयर विल बी द मूवमेंट ऑफ नेचर. अगर कैरेक्टर का मूवमेंट नहीं है तो मूवमेंट ऑफ नेचर होगा, और बाकी किसी चीज का मूवमेंट नहीं है, देन यू फील दैट द कैमरा का मूवमेंट होगा. आइदर द कैमरा पैन, आइदर द कैमरा टिल्ट, और आइदर डॉल इन और जूम इन काइंड ऑफ थिंग्स, बट देयर विल बी मूवमेंट, राइट? सो वंस यू स्टार्टेड वॉचिंग फिल्म्स, वॉच फिल्म्स द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैमरा पर्सन टू. कैमरा पर्सन के क्या क्या अप्रोच होते हैं फॉर द फिल्मिंग. सबका अपना अपना स्टाइलाइजेशन होता है.
in terms of lightings, right? बहुत सारे ऐसे होते हैं, they are using very hard backlight, है ना? बहुत ऐसे होते हैं जो काफी रेशियो ज्यादा नहीं रखते हैं फिल्म का। बहुत सारे ऐसे होते हैं, फिल्म नॉइल की बात करोगे, फिर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द वीके मूर्ति फिल्म स्टाइल्स। वीके मूर्ति को जानते हैं आप लोग? Yes, Anyone sir. have heard of वीके मूर्ति? Yeah, I have. Yeah. The association of वीके मूर्ति with? Uh, yeah, I have not watched his films, but Gurudutt, I know his. Gurudutt. Oh, yeah. I have not. Watch I those have not. films. Yeah, yeah, Gautam. No, sir. I know him, and I have seen about his styles and things, but I have still not. I have not watched Yes, his just see films. the films. Kagaj ke Phool must watch for everyone. Just watch the films. I'm not telling you about that the for the exam purpose. See the VK Murthy styles. How he's playing with shadows and lights. A magician kaha jata in terms of camera work. There is a magician who is playing with shadows and lights. So that's the art of VK Murthy. This is not the art of Guru Dutt. That's the style of Guru Dutt to playing with shadows. Right? That's not the art of Guru Dutt. वो गुरुदत्त का नहीं था, वो उनका था कि इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग ही विल प्ले विद दोज थिंग्स, वो उसके साथ प्ले करेगा, है ना? हाइलाइट्स एंड शैडोज के साथ, शैडोज के साथ, राइट ना? सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, दैट्स द स्टाइल ऑफ वीके मूर्ति, कि वो वीके मूर्ति का स्टाइल था। तो एवरी डीओपी हैव द सर्टेन स्टाइल्स, कि वो कैसे चीजों को किन किन तरीकों से कैसे दिखाते हैं, इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग, इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन, राइट? कि वो किस तरीके से चीजों को दिखाते। मेनी डायरेक्टर्स देखोगे और या डीओपीज, दे आर यूजिंग अ नॉर्मल लेंसेज लाइक स्टैंडर्ड लेंसेज, दैट देयर अप्रोचेस। मेनी आर यूजिंग अ वाइड एंगल लेंसेज, दैट देयर अप्रोचेस। दिस आर द अप्रोच ना, कि मे बी if director ask me to shoot something the mid shot, no, it's up to me कि मैं बताऊंगा, it will look according to a story, right? कि that mid shot I will shoot on the telephoto lenses or normal or wide angle lenses, right? So that's their choice, but there will be the mutual understanding कि वो दोनों कैसे आपको आपस में कैसे बात करते हैं कि how it should look good, कि ये अच्छा कैसे दिखेगा, और either the most of the things is कि how you convey the story, because every lens have their own particular strength, right? कि वो कहानी कैसे कहता है। तो दैट्स द थिंग्स कि जब आप पर्टिकुलर एक डीओपी के बारे में, इफ दे आस्क टू राइट अबाउट द वन डीओपीज, take out any renowned film of that DOPs, and for that reason you must have to watch the best film of those DOPs. अब ऐसा नहीं, आपको नाम नहीं पूछेगा, as you asked me कि if they ask कि write about your favorite DOP, right? That you asked, no? Or you named it, No, Gautam? sir. In Either your favorite DOP, maybe they will ask, maybe that kind of question comes. Suppose for an example, now the things comes, you have to make your favorite DOP first. For suppose for example, if I ask you which one which one your favorite director, your favorite director है, or your favorite films, your favorite film, suppose for an example, everyone have a one favorite film, right? होता है, सबके पास होगा, that you want to watch it again and again and again, होता है ना? क्या था फेवरेट फिल्म, सबको है अपना एक। Sorry. Just like that, you must have, but the favorite means you want to like watch their work or his work. That's the favorite thing. इसका स्टार फेवरेट होता है ना भाई, कि शाहरुख खान की फिल्म आएगी मैं देखूंगा, इसकी फिल्म आएगी मैं देखूंगा, यू आर वेटिंग फॉर द, या स्पीलबर्ग की फिल्म आएगी तो मैं देखूंगा। और क्या नाम है उस अवतार वाले का, अवतार वाले डायरेक्टर क्या नाम है, अरे जिसने ये कैमरॉन, बनाई है यार, क्या नाम है? जेम्स कैमरॉन सर, हाँ, जेम्स उसकी कैमरॉन। फिल्म आएगी तो देखूंगा। होता है ना, वेट करते हो ना भाई, किस लगेगा जाके देखूंगा ये फिल्म, वेट करते हो ना। द रीजन, आइदर द फेवरेट डायरेक्टर, आइदर द फेवरेट स्टोरी टेलर, और आइदर बहुत अच्छी साइंस फिक्शन फिल्में बनाता है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। दैट्स द रीजन यू आर वेटिंग फॉर इट। सो नटसेल की इसमें ये होना चाहिए कि बिकॉज यू गाइस आर इन वेरी आर्टिस्टिक फिल्म, एंड बट अभी हुआ क्या है कि द रीजन इज
Your ultimate goal is to achieve that aesthetics, but right now the technology is involved. कि टेक्नोलॉजी अभी साइंस इन्वॉल्व है बेसिकली, तो आपको अब दोनों चीजें पढ़नी है, एज वेल एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज द एस्थेटिक्स। तो दोनों के टर्म में जाना है कि हाउ दे आर यूजिंग दोज थिंग्स, कि एज एन डीओपी वो क्या क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, या पर्टिकुलर किस तरीके के लेंसेज यूज करते हैं। सो यू हैव टू Sir, ऑब्जर्व दोज थिंग्स। sir, या I have one more thing to ask. I don't know whether it's right or wrong, uh, या but uh, nowadays we can see that some people are saying that the cinematography should be very settled. The audience should not notice the kind of things. It should be very. It should. The purpose of cinematography is only to. It's only to serve the story and the thing. And some are saying that, oh, no, it's not like that. But in some movies that we can just watch movies for cinematography. It will be very beautiful, or the play of light kind of things. But when it comes to the overall movie watching experience, the movie will be very average. Yeah, the reason is the things is that now in India every month there's a like 300, 400, 500 movies are produced or released, right? Yeah, but yeah, that's only. But nowadays, many critics, and they are saying that the cinematography is very flashy, so it is very irritating. Like that, they are commenting on it, No, and the things is that it's Sir, coming. this It's this y- whole controversy arises when Roger Dickens quoted that there is a difference between pretty cinematography and good cinematography, and the whole yeah, idea of beautification and romanticism of cinematography started eventually, which was not actually supporting the cinema narrative but just enhancing the visual impact on yeah. the audience. Hmm. And that's Obviously, where the whole controversy arises, I guess. And a lot of but critics are saying the same thing, but also people are opposing it. but the things is that look, it's come because you cannot say that because as an look the camera background as an artistic point of view. Everyone wanted to make a good films, right? Have you ever heard any DOPs that who can say, I'll do the bad films, I'll do the bad lighting? Have you ever seen that? ऐसा कोई कहेगा क्या? नहीं ना? The things is that the medium, how they wanted to show it, right? It's totally depend upon the directors, the stories and DOPs and the audience. सबका अपना audience होगा ना? Have you seen the सलमान खान की फिल्म चलती है ना भाई? But अगर तुम उसको critics के point of view से देखोगे, right? तो is it digestible? डाइजेस्ट होने वाली फिल्म होती है बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं ना, होती है, नहीं That होता proves है ना। Satyajit Ray's statement that Indian audience is very unsophisticated proves right, हाँ sir. मैं बता नहीं बट वो बात नहीं कि हम सोफिस्टिकेटेड है। द रीजन इज जैसे हम बहुत मास है हमारा, सो एवरी पर्सन हैव द डिफरेंट चॉइसेस। सबका अपना मीडियम था। हम ये नहीं कर सकते सलमान खान की फिल्म गलत है, द सलमान खान फिल्म वाज टू बैड। द रीजन इज देयर इज सर्टेन ऑडियंस। तो जस्ट लाइक दैट इट्स वेरी सब्जेक्टिव विच काइंड ऑफ फिल्म आई वांटेड टू वॉच, राइट। अब एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम एटीज में बाकी सारी फिल्में चल रही थी, और बंगाल में देख लो क्या चल रहा था, पैरेलल सिनेमा चला है, आर्ट फिल्में चली हैं, आर्ट हाउस फिल्में चलती थी, नॉट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बट फिल्में तो चलती थी। हैव यू सीन द फिल्म ऑफ मृणाल सिंह? फिल्में चलती थी ना, Ghatak. ऋत्विक घटक, सत्यजीत रे पैरेलल फिल्में बनाते थे, चलती थी, क्रिटिकली अक्लेम फिल्में। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं है, अब तो सारा टाइम इसी ने ले लिया है, सिनेमेटोग्राफी बहुत क्लासी हो गया। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि फॉर विच पर्पस यू आर मेकिंग दिस फिल्म्स। टोटली कमर्शियल, ऑब्वियसली इट विल बी डिफरेंट, नो डाउट कि वो बहुत गलत नहीं है। द रीजन इज कि व्हेन इन ओल्ड डेज व्हेन सेलुलाइट पे फिल्म बनती थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन अ वन डे मेनी पीपल, इफ यू गाइस हैव यू नो was the interviews the old people or पुराने जो DOPs हैं directors हैं, in one day they have only shoot 4 shot. The many DOPs I have made like the Varun Mukherjee, RM Rao, the many DOPs I have made, and I asked them ki how much shot that you are shooting in the one day for the one schedule. They kept saying it's just a 4 shot that we have shooting. It means 4 shot means one page of a script. एक पेज हम शूट करते थे।
Right now, there's a pressure on DOP that you have to shoot at least 4 page. It means what? The 16 shot that you have to shoot. Now, who will approach their artistic way of lighting? कौन करेगा approach? Is there time to do that? Is there time? इतना टाइम होगा किसी के पास जो करेगा? नहीं ना? तो No, क्या sir. होगा? तो वैसे लाइट तो होगी फ्लैश, सीधी बात है. डू द फ्लैट लाइटिंग, एवरीथिंग शुड बी विजिबल जितना जल्दी हो सके. लेट अप द एरियाज. राइट नाउ मेनी लाइट्स, दैट काइंड ऑफ लाइट्स हैव केम मार्केट. अब उसी तरीके से तो वो देखोगे, कौन सी फिल्म थी यार, बहुत चली थी, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी यार, कांद, जस्ट फॉरगेट द नेम यार, बहुत अच्छी फिल्म है. Which language, sir? अच्छा अच्छा अच्छा, हिंदी में भी डब हुआ था. दैट वाज, अरे कुछ स्टोरी वाज लाइक दैट कि वो गोल्ड वोल्ड लेने के लिए उसमें जाता है, कुछ बंगाल की तुम्बाड़। कहानी, कोलकाता से कहानी है. गोल्ड लेने चला जाता है, कुछ बहुत अंदर तक, वो कुछ लेडीज होती है, उसको बांध के अंदर उसके माँ को रखा जाता है यार. मतलब गोल्ड से रिलेटेड है, गोल्ड लेने खदान में पहुंचता है, कुछ पुरानी हवेली काइंड ऑफ Tumbad, थिंग्स. are you talking about Tumbad, sir? विच वन? Tumbad. तुम्बाड़, तुम्बाड़, या तुम्बाड़, या सर, थैंक यू. तुम्बाड़. यू गाइस हैव सीन तुम्बाड़? Yes, हैव sir. सीन द सिनेमेटोग्राफी ऑफ इट? डू यू फील कि ये 3 महीने में शूट कर लिया है, 2 महीने में, 16 डेज के शेड्यूल में शूट हो गया होगा? Totally different kind of cinematography in that films. I literally, I love the way he just, the Sir, it's cinematography a basically. कहानी, yeah. recent movie, 2018 movie. Recently Recently released movie. released movie. I didn't watch much movie right now, yeah. No. I'm Just asking watch. about. I'm asking regarding Tumba. So yeah, Tumba recently, not the recently. It's I think 2019, no? 18, Oh, okay. 18, 2017 or 18. 2019. Tumbad. Very nice film, Tumbad. बिल्कुल देखनी चाहिए. इन टर्म्स ऑफ सिनेमेटोग्राफी एक अलग लेवल की चीज है उसमें. द लाइटिंग, एवरीथिंग टोटली टोटली डिफरेंट, और काफी So काफी the अच्छा अप्रोच है. cinematographer. So that's the thing. Your question is good कि अभी उतना नहीं होता. The reason they have the certain pressure. Why within 2 months you have to shoot everything. And now see the films, which films take times. See the productivity of it. उसमें दिखेगा तुम्हें, अगर टाइम लगा रहा है कोई तो उसमें तुम्हें दिखेगा चीजें. You can see it. I have the 14 days films, sorry, 40 days films. You can see it, how it will be. But they have to give time because for the lighting, for the composition, for everything, it takes time. है ना? That's the reason. अब कागज के फूल 4 साल में बनते हैं, बाकी फिल्में 3 साल में बनती हैं. ऐसे ऐसे 3 years 4 years लगते थे. रीजन for the one song they are keep shooting for the 3 days 4 days 5 days, है ना? तो वन सॉन्ग, है ना? अब इतना टाइम देगा कोई? तो नहीं देगा तो व्हाट देन डीओपी डिड, क्या करेगा वो? You have to survive in this market. So that's the reason. But the thing is that it's totally subjective. Make your own opinion on it, what you feel. Not getting that what people are saying. I started watching films, see to it, how it works, how things is going on. Agar within a month there's a 10 films or 8 films released, how many films have the good cinematography? Right? So make your own decision how to, because in this TV wings, it's a very analytical approach, a very subjective approach that they wanted to know that. If you guys have seen the questions, right? Very analytical approach. It's not like a yes or no. If yes, then why? If no, then why? So it's very subjective. There's a kind of debate that you are doing. So you have to write down those things. What you are thinking about that particular things. Or that particular approach, what you are thinking. So make your own decision when you are writing on it. कि ऐसा है तो क्यों है. जब सपोज कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइक आई सेड we earlier हमने किया था कि watching films on mobile phone and watching films in theater, what's the difference? It's totally subjective what you feel when you are watching. When you are watching, it's your observation. You can feel the differences. कि लैपटॉप पे फिल्म देखना, टीवी पे फिल्म देखना और थिएटर में देखना.
So that kind of things or that kind of questions ever come, write your own thought. सिर्फ अपना आप जो खुद सोच रहे हो सिर्फ वही लिखो. That things only. Not more than that. That's the things. Don't go with the Google, what people are saying, what Roger Dickens have said. Don't go with that. What you are thinking, write that things only. That's the things. Because they wanted to know about your perception, what you are thinking. एग्जाम में ये देखता है वो. ये नहीं देखता आपको आता कितना है, नहीं आता है ना, वो चीजें नहीं है. आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, दैट दे वांटेड टू नो. सो इज इट क्लियर गौतम? Okay, sir. Yes, sir. और है कुछ, एनीथिंग एल्स? ओके, क्वेश्चंस है किसी के? Sir, I have a question, but it's not about subject. But अभी exam paper change होने वाला है ना? Like how they have changed for the TV wing, like 60 marks for subjective writing and 40 marks for MCQ and MSQ. हाँ So ठीक sir, है. हम अभी वैसे it was supposed to we should answer like 4 to 5 question. Now it's No, gonna be six. right now you have to answer 4 question only. अभी हाँ previous year you have to 4. Maybe for हाँ the next it should be the 5 because 10 marks they just फिर 60-40 रेशियो कर दिया है. हाँ तो सर अभी MSQ और MCQ तो वो तो उस तरफ रह गया, मतलब 10 और 20 मार्क पे, 20 और हाँ, 20 मार्क पे. तो 20 सर और अभी 20. हाँ तो अभी ये 5 क्वेश्चन या फिर 6 जितने भी होंगे, तो सर या अभी आपके हिसाब से इनको कितना टाइम देना चाहिए हमें? नो लुक टाइम, द फर्स्ट थिंग्स ना, डू वन थिंग गाइस, जो मैं बता रहा हूँ वो एक्सरसाइज करो एक बार. टेक अ प्रिंट आउट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राइट? टेक अ प्रिंट आउट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. उसमें आंसर शीट भी होगा 5 और 6 सेट्स का, राइट? होगा ना प्रीवियस ईयर का? यस सर. Start answering on that page only with the timer. Switch off your phone, put the timer over there, start writing on it. That's the way. फिर देखो कि तुम किस जगह अटकते हो. बिकॉज वहां जो तुम कह रहे हो कि टाइम कम हुआ इन एमएसक्यू राइट, क्वेश्चन कम हुआ तो टाइम भी तो कम होगा ना टू सॉल्व द आंसर. यस सर. तो वो टाइम तो तुम इधर दोगे ना. सो स्टार्ट राइटिंग. लुक, सबसे पहला जो थिंग होता है, जो 20 मार्क्स क्वेश्चन है, राइट? व्हाट आई थॉट फर्स्टली, बिकॉज जो भी एमसीक्यू और एमएसक्यू के, आई थिंक दोनों पेपर साथ में देंगे शायद इस बार, या अलग अलग देते हैं? एनीवन अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर? आपने दिया था ना गौतम डायरेक्शन का? आई थिंक किसने दिया था? सर अलग अलग आता है। Me, अलग अलग आता है ना. फर्स्ट आवर में पहले आप वो करोगे, देन इट विल कम ना, राइट? पहले सर वो मल्टीपल चॉइस और वो मल्टीपल सेलेक्ट आता है, उसके बाद में वो सब्जेक्टिव का होता है, वो सबमिट करके हाँ ठीक दोबारा। है. तो उसमें टाइम आपको कम हो जाएगा शायद. टाइम जब इसमें बढ़ा है 60 मार्क्स के, तो टाइम ज्यादा होगा ऑब्वियसली. सो द उसमें सर नेचर टाइम ये है देने कि वाला कोई पॉइंट ही नहीं रहता है, मतलब लाइक अगर वो 2 आवर्स मिले हैं उसके लिए सब्जेक्टिव के लिए, तो उसमें आप सब्जेक्टिव ही करना है, तो उसके लिए हम्म. मतलब वो फिक्स हो जाता है टाइम पे। बट ओपन नहीं कर सकते ना कुछ ऐसा, यू कांट ओपन इट हाँ हाँ, बिफोर वही वन तो आवर. बता रहा हूँ मैं कि मतलब 1 आवर स्टार्टिंग में दे दिया उसके लिए मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल सिलेक्ट, तो वो 1 आवर में वही करना है बिकॉज उसके लिए शीट मिली होगी, और फिर वो सबमिट होगा तो फिर 2 आवर उसके लिए मिलेंगे, मतलब वो सब्जेक्टिव के लिए। हाँ, तो 2 घंटे मिल रहे हैं ना आपको, यू गॉट 2 आवर्स ना फॉर दैट. ये सर। 2 घंटे मिल रहे हैं ना, तो फॉर डू वन थिंग ना, सब्जेक्टिव का प्रिंट आउट निकालो. स्टार्ट राइटिंग आंसर ऑन इट. एटलीस्ट यू गॉट टू नो दैट कि आप उतने में कितना वर्ड्स लिख पाते हो. 300 वर्ड्स और 500 वर्ड्स, राइट? एक तो आपका वो प्रैक्टिस हो जाएगा सॉल्व करने का, है ना? और आपको अपनी टाइमिंग पता चल जाएगी, है ना? आपको अपने टाइमिंग का जो है एटलीस्ट पता चल जाएगा. एक सेकंड. देखो वैसे जब इस तरीके से डिवाइड करते हो ना,
30 to 35 मिनट्स आप इस क्वेश्चन के लिए रख लो। क्या कहते हैं दिस वन 20 मार्क्स के लिए उतना लगेगा ही तुम्हारा, बिकॉज यू हैव टू थिंक ऑफ इट, बिकॉज 20 मार्क्स में तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे वो हैं। तो बिफोर राइटिंग द आंसर ऑफ 20 मार्क्स, जो रफ वाला एरिया है ना, वट एवर द रफ एरियाज, उसमें 20 मार्क्स वाले आंसर के पॉइंटर्स लिख लो। ठीक है, you know the pointers, no? मैंने हमेशा से कहता हूँ, when you start writing answers, make it in pointers. Suppose you got the 5 pointers, right, or 6 pointers. Write down those pointers, because maybe once you started writing one pointer, होगा क्या बाद में तुम भूल जाओगे, ये भी होता है ना। स्टार्ट राइटिंग दोज पॉइंटर्स कि 5 पॉइंटर्स हमारे पास हैं, तो 5 पॉइंटर्स से तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा ना, हाउ मेनी लाइंस दैट आई शुड राइट फॉर द 1 पॉइंट, आइडिया लग जाएगा। और तुम्हें ये भी पता है कि इन्हीं 5 पॉइंट के बारे में लिखना है, तो कैलकुलेशन वैसे ही चलेगा। तो फर्स्टली रफ पेज पे हाउ मेनी पॉइंटर देयर शुड बी फॉर दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, रफ पेज में जाके वो पॉइंटर लिख लो, है ना। क्या वो इजी हो जाएगा? अच्छा, ये डन हो गया, ये डन हो गया, ये डन हो गया, ये डन हो गया। यू डिडंट नीड टू रीड इट अगेन। अभी आपका टाइम क्या जाता है ना, इफ एनीवन हैव अटेम्प्ट इन प्रीवियस ईयर, आफ्टर राइटिंग द आंसर्स यू अगेन यू स्टार्टेड रीडिंग दोस आंसर्स, करते हो? आफ्टर राइटिंग इट, जब तुम फिनिश करते हो एक आंसर, अगेन यू स्टार्टेड रीडिंग कि ठीक लिखा कि नहीं लिखा, करते हो या नहीं करते हो? इट्स जनरल ह्यूमन नेचर है ना, हम करते हैं या नहीं करते हैं? एक बार तो एक नजर डाल ही देते हैं, होता है ना। वो तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज सपोज फॉर अ सेकेंड मे बी यू हैव रिटन समथिंग रॉन्ग, इज देयर चांस टू मेक इट राइट? नहीं ना। तो जो कर दिया उससे आगे निकल जाओ, है ना। तो उसमें क्या है कि अगर आपने पॉइंटर्स में लिखा तो गॉट टू नो दैट हाउ मेनी पॉइंट्स दैट आई हैव रिटन, 5 पॉइंट्स, ओके, इज इट ओके, चलो हो गया। रिपीट हमने नहीं किया है, पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट विल नेवर रिपीटेड। एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ। जस्ट लाइक द 5 मार्क्स, ये जो शॉर्ट नोट्स वाले हैं उसको भी ऐसे ही निकाल के लिख लो। सो 30 to 40 मिनट्स एक 20 मार्क्स पे, तो उसके बाद अपने 20-20 को डिवाइड कर लो, है ना। अगर 4 क्वेश्चन हैं, 20-20 अगर आपने डिवाइड किया तो क्या हुआ, 80 मिनट्स, राइट। हो गए ना भाई, 4 मान लो हैं तो कितना हो गया, 80 मिनट्स। और उधर आपने 30 दे दिया, कितना हो गया, 110। 10 मिनट आपके पास बचे हुए हैं, उसमें से हो सकता है किसी, फॉर सम आंसर्स यू हैव टू थिंक मोर, यू हैव टू यू नो वेट फॉर इट, कुछ याद करोगे, रिकॉल करोगे, तो दैट 10 मिनट्स यू हैव। बट 20 मार्क्स पे एटलीस्ट ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, 30 to 35 मिनट्स, 30 मिनट्स एटलीस्ट लेके चलो, 20 to 30 मिनट्स के बीच में हमें ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन कर देना है। तो अगेन फॉर टुमारो, और जो भी जब भी आप आंसर करोगे, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट एंड स्टार्ट राइटिंग कि आप एक क्वेश्चन को, 20 मार्क्स क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व करते हो। बट आपको फोन ऑफ होना चाहिए, टाइमर लगा होना चाहिए कहीं पर, या फोन फ्लाइट मोड में, देयर विल बी द टाइम, एंड सी टू इट कि क्या सॉल्व हो पाता है, नहीं हो पाता है ना। तो चलिए, और कुछ है किसी को एग्जाम से रिलेटेड तो पूछिए। शिवम, रोहित, रोहित आपने नया ज्वाइन किया है या पहले थे? सर मैं पहले था, ये रोहित, बीच में मेरी 6-7 क्लासेस छूट हाँ गई, मैंने आप, कुछ हाँ, काम बाकी तो थे यहाँ पर, आप नहीं दिख रहे थे। तो डे आफ्टर टुमारो हाँ, तो एग्जाम है, वो आई थिंक बीच में सबके से एग्जाम अपने अपने 5-6 सिटीज में क्लासेस ही मेरी है, छूट या गई। किसी को ट्रेवल करना पड़ रहा है? एग्जाम सबके अपने अपने सिटीज में है, या ट्रेवल करना पड़ रहा है आप लोगों को? अभी सर सिर्फ टीवी विंग का ही है ना, उसमें तो मैंने भरा ही। अच्छा, चलिए। एक चीज मैं दिखाता हूँ, 1 सेकेंड होल्ड कर।
Okay, you guys have watched Bypass? Bypass, the short film. Yes, sir. Yeah. सबने देखी है क्या? अगर नहीं देखी है, guys, just let you know one thing. Because it's I think my last class. But no worries. मैं जेट वाले एग्जाम से पहले मैं शायद क्या कहते हैं, मैं आऊंगा एक उसमें आप लोगों से बात करने के लिए। बट ठीक है, ये जो ग्रुप है अपना, मैं इसमें भी अपडेट भेज दिया करूंगा और आप पर्सनली मुझे भेज सकते हो। वॉच द फिल्म बाईपास और ओनली राइट आउट द पॉइंट्स दैट यू 20 मिनट्स फिल्म है, राइट गौतम? कुछ 20 मिनट की फिल्म है ना? Yes, sir. 20 minutes film. Yes, sir. 20 मिनट्स फिल्म है। You guys, you Nawasuddin must Siddiqui, have sir. to watch that films. Bypass देखो short film and write Sir, down we that have how many watched and we have already discussed about anything. which one Bypass, we have discussed about it. we have discussed this one. The No, but no one sent me the points, right? okay, about the metaphors and the We things. Yeah, no one discuss. I think एक या दो लोगों ने भेजा था, बाकी अगर देख sir, लिया, I think send भेज me दिया, we have the discussed. मुझे याद नहीं आ रहा है बस। If we have discussed, then it's okay. But जिसने नहीं देखा, you guys must have to watch those films. एक बार देखो। एंड जो मैं कह रहा हूँ फिल्म देखने का आप लोगों को, यू मस्ट वॉच फिल्म्स। मैंने लिस्ट भी भेजा था कुछ फिल्म्स का आप लोगों को, ठीक है? अगेन आई एम कुछ मैं ऐसे फिल्म के लिस्ट भेज रहा हूँ फॉर द 3 years गाइस, अभी क्योंकि अभी देखोगे नहीं, परसों एग्जाम है, जो स्पेशली एट द टाइम ऑफ ओरिएंटेशन एफटीआई में दिखाई जाती है। बट दैट फिल्म है अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड इट। आई विल सेंड यू दैट 5 फिल्म्स नेम, यू मस्ट हैव टू वॉच बिफोर एंटरिंग द एफटीआई, है ना? वो not it's I'm not only talking about the the written exams, I'm talking about the orientation too। मैं orientation तक की बात कर रहा हूँ, है ना? कि वो वहां भी हेल्प करेगा तुम्हारा, है ना? तो वो चीजें मैं वो नाम भेज रहा हूँ, 5 और 6 फिल्म्स जो ओरिएंटेशन में बाकी जो दिखाई जाती है, और एवरी जितने किसी भी एफटीआई से मिलोगे तो वो फिल्म उन्होंने देखी ही होगी। दैट 5 और 6 फिल्म दैट आई विल सेंड यू। और वो उसमें से 4 फिल्में तो हैं जो अवेलेबल है, वो जो मुझे पता है, आई हैव वॉच्ड, तो वो आप देख सकते हो। आई विल सेंड इट टू यू गाइस, है ना? सो लेट्स टेक अ 10 मिनट शॉर्ट ब्रेक और फिर मैं ये मल्टी कैमरा वाला डिस्कस करूंगा, ठीक है? ओके गाइस। ओके भाई, पीपीटी दिख रही है सबको? Yes, sir. Yeah, the previous year questions I think everyone have seen. क्या है क्वेश्चन? Suppose we are shooting a live music come talk show program of Doordarshan channel on multi-camera setup. In total, there are 5 person, 4 musician and 1 speaker. 4 musician have flute, synthesizer, sitar, and tabla. The person with the synthesizer is sitting next to the speaker as he is the associate speaker of the program. Draw a clear aerial diagram of their position on the floor, marking who is doing what like you would have done to arrange them for the real shooting events. B. How many camera will you use to cover the event smoothly? Giving variation in the image size for such a program. C. C. Draw a camera placement like cam A, cam B, cam C. It is in respect to your artists in the same diagram. Okay. अब क्वेश्चन ए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ अ क्लियर एरियल डायग्राम ऑफ देयर पोजीशन ऑन अ फ्लोर, मार्किंग हु इज डूइंग व्हाट लाइक यू वुड हैव डन टू अरेंज देम फॉर द रियल शूटिंग इवेंट। अब क्वेश्चन समझ गए सब लोग आप कि क्या कह रहा है? देयर इज अ लाइव म्यूजिक शो और टॉक शो व्हाटएवर, राइट? फॉर एनी चैनल्स, दूरदर्शन दे दिया है, राइट? देयर इज अ 5 person ऑन स्टेज। स्टेज कैसा होता होगा? रेक्टेंगुलर। मीन द 5 person इज द रेक्टेंगुलर, राइट? ऐसा ही हुआ होगा। 4 लोग अलग अलग उसमें हैं और एक जो है वो स्पीकर है आपका, तो 5 person विल बी ऑन स्टेज। ए आपका हो गया कि एरियल, एरियल द टॉप व्यू जो है आपका, वो कह रहा है इसे डजंट मीन, आई थिंक इसके लास्ट में ये भी लिखा हुआ था, देयर इज नो एक्स्ट्रा मार्क फॉर ड्राइंग। आई थिंक लिखा हुआ था कि ड्राइंग के लिए कोई अलग से मार्क्स नहीं है। सो द बेसिक इज इफ यू डोंट नो द ड्राइंग, जस्ट नेम इट कैम ए, कैम बी, कैम सी। मैं दिखा देता हूं कैसे।
फॉर एन एग्जाम्पल, कि किसके फील्ड में कौन सा आ रहा है, ये तो कर सकते हैं ना, लाइक दिस। इज इट इजी टू मेक? कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी, आइदर लिख सकते हो कैरेक्टर ए, बी, सी, डी, जो भी है, या ना भी बनाओ ए बी सी डी, नॉर्मल लिख दो। फ्लूट वाले को एफ लिख दो, तबला वाले को टी लिख दो। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ? ये सबसे इजीएस्ट वे है ना। यू डोंट नीड टू मेक दिस ऑडियो बोथ। ये मैंने कहीं से डाउनलोड किया, तो आपको ऑडियो बोथ बनाने की जरूरत नहीं है। और चलो, ये भी नहीं हो रहा है, तो एक और ऑप्शन है, ऐसे बना दो। इधर 5 कैरेक्टर ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो 5 कैरेक्टर। ये इजी एरियल व्यू हो जाएगा आपके लिए बनाने के लिए। स्टेज बना दिया, स्टेज विल बी रेक्टेंगुलर, बिकॉज 5 पर्सन है, 2 होते तो आप कहते चलो कोई बात नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है स्टेज? रेक्टेंगुलर ही होता है। यू कैन मेक इट रेक्टेंगुलर और उसके अकॉर्डिंग वो कर दोगे। पॉजिशनिंग कर दिया आपने, बट द क्वेश्चन इज, बी क्वेश्चन थोड़ा सा, जो बी है इसका, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया हुआ है। बी वाले क्वेश्चन में बी क्या है? How many camera will you use to cover the event smoothly, giving variation in the image size for such a program? Image size means what? Anyone? The short size, close It up, means medium. close, medium, wide, right? So it means if there is a 5 person, so there should be the variation. If the 1 person is the close, right, there should be the wide, should be the full. It should not repetitive. कि नहीं कह सकते for the flute person I use the wide shot, for tabla I use that kind of shot, right? You cannot say like that. So वो ये कह रहा है कि visually, if you just think about the editing purpose, if the every shot size remains same, mid, close, 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 वो बहुत interesting नहीं लगेगा. So that's the reason. Now the different instrument have the different shot size. No, for the flute person, right? फ्लूट कहाँ से बजाता है? माउथ से, राइट? सो अगर ये भी शॉर्ट हुआ तो ये चल जाएगा, मिड शॉट और मिड क्लोजअप काइंड ऑफ थिंग्स चल जाएगा ना? इज इट पॉसिबल और नॉट? मिड शॉट से काम चल जाएगा। फॉर द तबला पर्सन क्या करना पड़ेगा? इट कुड बी फुल शॉट, तबला तभी दिखेगा ना। और आइदर you can take only close up of you can write it down over here, right? What you can write down, ये थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि make a frame, I will use the zoom lenses, right? So I'll make the close up of, sometimes I can make the close up of hand जब वो तबला बजा रहा होगा, and even then you can zoom out और उस frame को क्या करेंगे हम? What you can do, the whole tabla person will be in frame. So is it variation or not from one shot to another shot? Is there variation? होगा ना, तबला वाले में हो सकता है। Then sorry, सितार, सितार लॉन्गर वन। सितार के लिए क्या करना होगा? यू हैव टू शूट फुल शॉट। just think about कि when you are writing the answers, what I am telling you, don't go with the whatever I have written over there or what I am explaining. Just think about it कि you are the person, you have to shoot this event. How you gonna shoot it? And how you arrange the person? कि किसको कहाँ रखूंगा? How I arrange those person? कि the first things कि अगर आप कोई भी टॉक शो या लाइव म्यूजिक बैंड देखते हो, you guys have seen those shoot, right? Have you ever seen कि one musician's close frame in one musician's, either they are playing tabla or playing guitar or something else, once there is a close shot of that character, only that character is visible. So if you have seen the arrangement in wide shot, every instrument player have the ample amount of space. They are not sitting closer to each other. So that's the reason for the frame there is a certain room. ऐसा नहीं कि close में थोड़ा wide हटा और तबला वाले के वहां आ रहा है। Have you ever seen, अगर professional कोई भी program देखोगे तो, have you seen the band have the certain the distance from one person to another person?
या वो ऑर्केस्ट्रा की तरह सब एक में ही घुसे होते हैं? हैव यू सीन द लाइव म्यूजिक कंसर्ट? डिस्टेंस होता है फ्रॉम वन लाइक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर टू अनदर इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, हाँ या ना भाई? बताओ कोई यस किसी सर। ने देखा है लाइव बैंड या कुछ भी ऐसा, या लाइव शो? सर लाइव नहीं देखा है, एनीवन बट ऑफ यू? लाइव का रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं ऑनलाइन वो देखा है। सपोज करो, छोड़ दो, यू गाइस हैव वॉच्ड द कोक स्टूडियो? यस सर। यस सर। कोक स्टूडियो देखा ना? कोक स्टूडियो में क्या होता है, कितने कितने दूर पे सब बैठे होते हैं, या सब वो क्या कहते हैं, वो जो हम कव्वाली करते हैं उसकी तरह सब एक ही साथ बैठ जाते हैं? कभी कव्वाली प्रोग्राम को तुम क्लोज क्लोज में शूट कर पाओगे? नहीं ना, कव्वाली वाले शॉट को देखो, सारा वाइड वाइड ही होता है ना, और या फिर सिंगर का क्लोजअप ऐसे ही चलता है। बट इफ यू गाइस हैव एवर सीन कोक स्टूडियो, ये काम करना, कोक स्टूडियो देख ही लेना, जिसने नहीं देखा है, 4-5 प्रोडक्शन। और पाकिस्तान वाले ने एमटीवी इंडिया वाले शो देखना, पाकिस्तान वाले से ज्यादा खर्च है यहाँ वाले प्रोडक्शन पे, सॉरी, बट है, लिटरली है यहाँ थोड़े से विजुअल सर वो। सो यू कैन सी दैट कि वो गिटार वाला उधर बैठा है, बेस गिटार वाला इधर है, दोनों गिटार ही, बट दोनों गिटार वाले में डिफरेंसेस है, तबला वाला कहीं और बैठा है, कीबोर्ड वाले इज समथिंग डिफरेंट प्लेसेस। द रीजन ये है कि फॉर द विजुअल ट्रीटमेंट, कि हर किसी को देखोगे, बांसुरी वाले का अलग है, वो जो कुछ ऐसे बजाते हैं, व्हाट आई फॉरगेट द नेम, उसके लिए अलग कैमरा लगा हुआ है और अलग फ्रेम है, और किसी के फ्रेम में, नॉट अ सिंगल फ्रेम, देयर इज अनदर पर्सन विल कम्स, और अनदर किसी का विजुअल्स आ रहा है कुछ अदर द हैंड, बिकॉज देयर इज अ 15 पीपल, 15 इंस्ट्रूमेंट और 16 इंस्ट्रूमेंट, बट एवरी इंस्ट्रूमेंट हैव अ सर्टेन कैमरा, और उस कैमरे में दूसरा कोई नहीं आता है। द रीजन, ब्रीथ दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू द कैमरा प्लेसमेंट। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि यू हैव टू सिट, यहां लिखा हुआ है marking who is doing what, like you would have done to arrange them for the real shooting event, मतलब आपको अरेंज करना है। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू द कैमरा पर्पस, कि हाउ यू वांटेड टू अरेंज देम, तुम कैसा चाहते हो इससे सब कैमरे में सब दिखे। यू कांट से दैट, अरे यार तबले वाले में तो ये आ रहा है, यू कैन नॉट से दैट। तो द फर्स्ट थिंग्स, व्हेन वंस यू स्टार्टेड राइटिंग, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्लेन इट क्लियरली दैट अरेंजमेंट इज लुक लाइक दैट, कि देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस between each characters or each instrument players. The first line, just make it clear कि मैं बिठाऊंगा ही ऐसा जिसमें कि सबके बीच में डिस्टेंस होगा। So that makes it clear कि यार इसको ये पता है because of the camera, because नजदीक भी बैठा है तबला वाला, तबला बजा रहे, नाच थोड़ी रहा है, तबला प्लेयर इज नॉट डांसिंग, तो हो सकता है उसके बगल में बांसुरी वाला बैठ के बजा ले। और मेनी टाइम्स यू गाइस हैव सीन दोस काइंड ऑफ स्मॉल स्पेस ऑफ स्टेज, देयर थिंग्स इज हैपन, तबले वाले के आगे बैठा हुआ रहता है, सॉरी, कीबोर्ड वाले के आगे तबला वाला बैठा होता है, मेनी टाइम्स यू कैन सी इट, ड्रम वाले के नीचे वो पैड वाला बैठा होता है। इफ यू गाइस हैव एवर सीन द कंसर्ट, द थोड़ा लो लेवल का, लो बजट वाले जो कंसर्ट, उसमें ऐसा होता है। बट राइट नाउ मेक इट क्लियर, जैसे ये लाइन तुमने क्लियर कर दिया है ना, आई विल गिव द एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर इच कैरेक्टर, सो द वन शुड नॉट कम्स इन अनदर फ्रेम, कि दूसरे के फ्रेम में वो ना आ जाए, बिकॉज फॉर द तबला अगर तुम वाइड करोगे, बगल में कीबोर्ड आ रहा है, वो दिखाई देगा, दैट फ्रॉम फ्रेम इज नॉट लुकिंग कूल, वो अच्छा नहीं दिखेगा। राइट तो बी तुम्हारा क्या हो गया? नाउ द हाउ मेनी कैमरास, तो क्वेश्चंस। अब क्या करो, राइटिंग, लुक इट्स टोटली डिपेंड, ऐसा नहीं है कि देयर इज अ फिक्स आंसर कि तुम 4 कैमरा कहोगे तो बोला चलो गलत है निकालो इसको, और 5 कैमरा बोल दिया तो नो इट्स रॉन्ग। नो, इट्स योर ऑब्जर्वेशन हाउ यू वांटेड टू शूट दिस प्रोग्राम। सपोज फॉर मी, इफ आई हैव टू शूट दिस थिंग्स, हाउ आई विल, मैं इसमें, हो सकता है मैं इसके कितने 5 कैरेक्टर हैं, मैं 5 कैमरा यूज करूंगा फॉर द 5 कैरेक्टर्स, 5 कैमरा यूज करूंगा, बट हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू, बट इन वन कैमरा देयर विल बी 2 पर्सन, तो 5वें कैमरे का क्या करूंगा मैं? इन वन कैमरा देयर विल बी 2 कैरेक्टर्स, सो देयर इज अ ओनली 3 कैमरा। ये क्या रणवीर, एआई कंपेनियन सर्विस क्या होता है? नहीं सर, वो गलती से हो गया सर। अच्छा अच्छा, मुझे कहा यार एआई से कहीं मुझे कुछ बना तो नहीं दोगे तुम? नहीं नहीं सर। हाँ, ठीक है, आई गेट इट, कहाँ थे? ओके, सो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ आई विल यूज दोस कैमरास। अगर मुझे पूछा जाए कैम ए, कैम बी, लेटर ऑन विल डिस्कस ऑन इट, कि व्हाई आई विल चूज 5 कैमरा, देयर इज अ 5 कैरेक्टर, सो आई विल चूज 5 कैमरा, बट इन वन कैमरा देयर विल बी 2 कैरेक्टर, what I will do with the second camera?
Like fifth camera, that camera, वो तो camera extra है. The fifth one is extra because I will use one camera for the flute, one for the tabla, one for the sitar. But यहाँ क्या लिखा हुआ है? The person with synthesizer is sitting next to the speaker. This means speaker और वो को associate speaker भी है. तो दोनों को मैं एक ही फ्रेम में रखूंगा. Both character will be in one frame. एक शॉट होगा जिन दोनों में वो दोनों कैरेक्टर रहेंगे, सेंसाइजर वाला भी और स्पीकर भी, बिकॉज सिंपल स्पीकर के लिए लगाने की जरूरत नहीं है. तो वो दोनों, द बोथ कैरेक्टर आई विल टुक इन वन कैमरा बिकॉज दे आर जस्ट क्लियर लिखा हुआ है यहां पर क्या, सिटिंग नेक्स्ट टू द स्पीकर. स्पीकर के बगल में, तो बहुत डिफरेंसेस दोनों के बीच में नहीं है. If you are making close up or any wide shot or full shot, the another character will be visible. So that's the reason I will choose only one camera for the both character. और उसी का shot बनाऊंगा, mid shot बनाऊंगा, दोनों का बनाऊंगा. Now the question is what I will do with the fifth camera. Now here I will use a bit different things. Whatever they have already asked in question. The fifth camera, because it's the live music show hai. Go with the word. It's a live music means what? Live music means what? Anyone guesses? On air, It's on what air. we are shooting. Live music on air, but there will be audience ना. अगर live music की बात करूं, there will be audience or not? Live music वही होगा ना कि audience होगा. टॉक शो में ऑडियंस बैठे होते हैं ना. There will be audience or not? Yes, sir. Audience होगा ना, obviously. गौतम? Yes, sir. Yeah, there will be. There will be. So they are not only using word कि you have to shoot any music show or something else. They use one word that is live music. Right? Now use your brain. If there's a live music, there will be audience. तो क्या एज एन प्रोग्राम हेड, सपोज करो तुम प्रोग्राम हेड हो, ठीक है, प्रोग्राम हेड हो या तुम कैमरा हेड हो, टेक्निकल टीम के हेड हो, हाउ यू विल डू दिस प्रोग्राम? तुम कैसे कैप्चर करोगे? You will not even use a single expression or single things about the audience. Will you capture that frame or not? Will you capture that frame or not? करोगे कि या नहीं? लाइव भी है तो ऑडियंस के कुछ तो दिखाएंगे ना, रिएक्शंस और समथिंग एल्स. Yes, sir. कुछ तो दिखाएंगे. Do you have that camera? Do you have that camera? लगाना पड़ेगा सर. कैमरा लगाना पड़ेगा ना. So that's the reason. Again, इसमें लिखा हुआ नहीं कि तुम ऑडियंस कहीं लिखा हुआ. Is there anything that I've written over there? That's the things. So, one more thing I want to, while we are planning that in front of this rectangular stage, we are placing the camera. So now it's a live show means the audience should watch the show no, sir. So according to that, we should place the camera. For every live show, there is a space in front of the stage for the camera. Okay. Otherwise, we should write that the camera person should be in the mid of the audience crowd and using the telephoto lens like No, that. don't need to write it. Don't need to write it. Don't go with in depth. Because for the everything, no, for every stage show or for these things, there is a space for the camera. Even देखते हो मोदी जी जाते हैं तो कैमरा वाले टीम के लिए आगे से जगह बनाया हुआ रहता है ना. Even rally or any kind of things, have you seen that for the media persons there is another stage, not the stage, the space. So for the camera, even in the theater also, for the wide camera, there is a corner से center जो है वो कैमरा के लिए रखा हुआ रहता है. So don't go with that much of detail कि people will use telephoto lenses फलाना इनका, that's different things. If you are using telephoto lenses, maybe someone in front of the lens and they will do something else. कोई खड़ा हो जाएगा audience में से तो, then how are you gonna shoot it? Is it difficult, no? So I'm sorry. If you wanted to use, you can use it. For that purpose, I will use telephoto. But the thing is that you place the camera like this, you make the angle, right? So you can say that things because they have used a word called live music. So you can say that सब कोई बैठा होगा जो भी है, yeah, talk show है, बैठा होगा. So at that point of time, you have to set the camera because production है. So according to that, it's not just like an event, ना. Live music, so live करना है किसी चीज को ना. So at that point of time, they have certain things that is fixed.
Maybe you can say कि one camera will be on jib if you have the production, right? But I just make these things, very, very subtle. The reason is you go with the words because this thing's only for the 5 marks. This question is for 5 marks only, I think. ये सिर्फ 5 marks के question है. So go with the pointers only. If it will be 10 marks, then you can make it in more detail. You can write in more details. One camera will be on jib, right? So continuously for the any characters कुछ ऐसा special है तो you can capture those elements, right? कि different person पे जाएगा, so there will be certain moment. You can put one camera jib too because it's not fixed. ये भी नहीं का एक बजट नहीं है या 4 ही कैमरा यूज कर सकते हैं, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं का है. और अगेन अभी इसमें क्या करूंगा मैं, 5वें कैमरे को, चलो सपोज फॉर एन एग्जांपल, एक कैमरे को मैं मूवमेंट पे डाल दूंगा. मूवमेंट इन द सेंस दैट कैमरा पर्सन इज फ्री, वो कहीं भी शूट कर लेगा. एंड द वन कैमरा will be the wide camera in which everything will be recorded. होगा ना, जो कैमरा एक जो हमने फ्री रखा हुआ है, the one camera will be wide camera, right? That will establish everything, every 5 characters, whole stage basically. The one camera is the master shot, one camera master, then rest of the 3 camera, the one camera with the 2 characters and the one camera for the other characters. एक कैमरा और बढ़ा दो फॉर द ऑडियंस, और आइदर यू कैन फिक्स वन कैमरा फॉर द मोमेंट कि दैट विल कैप्चर द ऑडियंस रिएक्शन एज वेल एज, और किसी का भी क्लोज अप और दैट काइंड ऑफ इंसर्ट शॉट दैट दे कैन कैप्चर. सो इट्स टोटली इट्स सब्जेक्टिव कि हाउ यू वांटेड टू एंड व्हाट विल बी योर अप्रोच, बट इट शुड लुक रियलिस्टिक, ये फेक नहीं लगना चाहिए, राइट? तो दैट्स द थिंग्स. उसके बाद क्या कह रहा है? हाँ, ड्रॉ कैमरा प्लेसमेंट लाइक कैम ए, कैम बी, कैम सी, कैम डी, जो भी है, वट एवर इट इज. चलिए आते हैं यहाँ पर. सॉरी. हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ चलिए. Flute player position on one end of the row, possibly stage left. The musician plays the flute, and the placement allow for individual focus when needed. Sitar player position in the middle of the row. The musician plays the sitar. The center position ensure balance and symmetrical in the visual composition. थोड़ा सा कंपोजिशन के बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज सितार होता है तो दैट एरिया इज ओवर देयर, सो इट विल मेक थिंग्स बैलेंस्ड एंड एट ऑल, है ना. तबला प्लेयर पोजीशन ऑफ द अदर एंड, stage right. This musician plays the tabla similar to the flute player. This position allow for individual focus. A speaker with the synthesizer, दूसरा जो seated next to the tabla player, the speaker allow plays to synthesizer and is the associate speaker of the program. This arrangement facilitates communication and coordination between the speaker and musician. अब एक सेकंड देना. चलिए. हाँ, कुछ पूछ रहे कोई क्या? हाँ वेदांत. वेदांत वॉइस ना आपकी मजल सी आ रही है. नहीं सर, नथिंग नथिंग. ओके चलिए. तो नो नो, अभी सितार देखा है ना सबने, एंड सिंथेसाइजर मींस द कीबोर्ड, राइट? वो जो कीबोर्ड होता है, तो कि अब तुम कहोगे सिमेट्रिकल बैलेंस कैसे हुआ? बिकॉज हैव यू सीन द कीबोर्ड प्लेयर कि ही विल सिट ऑन द ग्राउंड. कीबोर्ड प्लेयर ग्राउंड पे नहीं बैठता ना, वो चेयर पे बैठता है, ऊपर अपनी चीजें रखता है, राइट? वो जो कीबोर्ड होता है ऊपर रखता है थोड़ा सा, और इधर हल्का सा अप होता है सिंथेसाइजर रखने के लिए जगह होता है ना, बिल्कुल नीचे नहीं रखता है. तबला प्लेयर कहाँ रखता है? अब बहुत सारे में खड़े होकर बजाने लगता है, ऐसा नहीं, बट द जो नेचुरल वे है वो क्या है तबला वाले का? नीचे बैठ के ही बजाता है ना भाई. सो जस्ट लुक अराउंड दिस थिंग्स कि क्या ये विजुअल जो है, क्या ये विजुअल प्लेसमेंट इज लुक सिमेट्रिकल, लुक बैलेंस्ड और नॉट?
जो पोजिशन है, और अगर नहीं है तो हाउ इट शुड लुक बैलेंस्ड. तो जस्ट वॉच दोज प्रोग्राम्स कि क्या वाइड शॉट में, इन वाइड शॉट इज इट लुक बैलेंस्ड और नॉट. सो अकॉर्डिंग टू दैट, ऐसा नहीं कि मैंने कहा तो ऐसा ही होगा, अकॉर्डिंग टू दैट थिंग्स यू कैन प्लेस दोज थिंग्स. बट यहाँ पर क्या, स्पीकर के बगल में ही कीबोर्ड वाला आएगा, है ना, बिकॉज वो को स्पीकर उसका है. सो दैट्स द थिंग्स. दूसरा क्या है? तो ये जो मैंने आपको बताया वो कैमरा प्लेसमेंट है मेरा, कि मैं इस तरीके से करूंगा. The number of camera required depend on the desired coverage and visual variety of the program. Wide shot camera A capture the entire stage, providing an overall view of the setup, including all musicians and the speaker. One more thing, ये जो पहला कैमरा नंबर होता है हमेशा वाइड शॉट को दिया जाता है, और रखना चाहिए बेसिकली. वैसे कैम ए फॉर द मास्टर शॉट, उससे एक आइडिया लग जाता है. सो दैट्स द नेम इज कैम ए, जिसमें कि सारा वाइड शॉट कैप्चर होगा. इंडिविजुअल म्यूजिशियन शॉट, कैम बी, कैम सी, कैम डी. This camera focus on each musician separately, showcase their skill in close-up. For example, Cam B could focus to the flute player, Cam C on the sitar player, and Cam D on the tabla player. Now, here is the, उसने क्या कहा था वहां पर, different shot size. तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है. तो you can explain it कि for the flute player it will be closer, for the tabla it will be mid shot, for the sitar it will be wide shot. Wide or maybe किसी एक के लिए you can use that word, you can zoom in or zoom out according to that thing. So I think tabla, for the tabla player, that is best idea, because fingers और hand के postures दिखाई देंगे. And then the, because इसमें बहुत ज्यादा face का expression नहीं होता तबला player का, right? So hand का ज्यादा movement होता है. You can go with it. You can write about the close up of tabla player. Then the speaker का ही shot है आपका, right? तो उसमें दोनों characters दिखाई देंगे. वही है. चलिए, नो शॉर्ट साइज ऐसे बना सकते हो, बना के, और दैट द एंगल, कि किसी को वन मोर थिंग, अगर तुम जूम लेंस यूज कर रहे हो, अगर नेमिंग देना चाहते हो 20 मार्क्स, तो थोड़ा सा एंगल टेढ़ा कर सकते हैं, एंगल सॉरी छोटा कर सकते हैं. और इधर ड्रॉ द कैरेक्टर की फ्लूट वाले के पास कौन सा कैमरा है और इसके पास कैमरा, बट नेम द कैमरा, कैमरा ए, कैमरा बी, कैमरा सी, कैमरा डी, कैमरा डी, जो भी है आपको नेम देना पड़ेगा. बिकॉज ऊपर आपने वर्ड में आपको एक्सप्लेन भी करना है कि कैमरा ए फॉर द फ्लूट पर्सन, सॉरी कैमरा ए फॉर द वाइड शॉट, कैमरा बी फॉर द, जैसे कि कैम ए यहाँ पर देखिए वाइड शॉट लिखा हुआ है, तो सी द एंगल ऑफ इट, कि कैसे बना हुआ एंगल. कैन बी एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, तो किस तरीके से, हाउ इट इज पोजिशन्ड. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन मेक फ्रेम. यू कैन नॉट से दैट कि कैमरे में दूसरा कैमरा आ जाएगा, है ना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट वो कैमरे की पोजिशनिंग होती है. द वाइड थोड़ा नीचे से होगा, वो सॉरी दूसरा शॉट वो फ्रेम में नहीं है. दे आर यूजिंग टेलीफोटो लेंसेज बिहाइंड द कैमरा, और थोड़ा सा ट्रैपॉड के नीचे से और साइड से. सो दे हैव टू सेट इट, वो सेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू दैट. उसके फील्ड में वो नहीं आएगा बेसिकली. So according to that, you can place your camera and make those frames. You know, that's the things. But अभी क्या है कि for an example, I have explained these things. Suppose now what you guys can practice is कि now I'm giving you one task कि you have to shoot a cricket match. I think this question have came already. आया है क्या? यस सर, एक है सर पेपर में. क्रिकेट मैच का, चलो आया हो. क्रिकेट मैच छोड़ दो, लाइव इवेंट भी आ गया, क्रिकेट मैच भी आ गया. हम्म हम्म, क्रिकेट मैच हो गया, लाइव इवेंट हो गया. और क्या हो सकता है? कोई एक सिचुएशन पे हो सकता है तुम्हें. हम्म, थिएटर पे है, हाउ टू शूट अ थिएटर और प्ले, हाउ टू शूट अ थिएटर और हाउ टू शूट अ प्ले, इसका है कुछ? नहीं आया, नहीं आया. कोई बात, क्रिकेट मैच वाला ही आप लोग लिखो, ठीक है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग वाले फॉर द 1 ईयर में कह रहा हूँ, फॉर द 1 ईयर. सो एटलीस्ट यू गॉट टू नो दैट ही कैमरा प्लेसमेंट और कैसे आप एक्सप्लेन करोगे. दैट्स द थिंग ओनली, कि
क्रिकेट मैच का आई थिंक किसी में आया 2019 या 20 में आया हुआ, so you guys can write it out. ये है बाकी शॉट टेकिंग मेथड पता है आप लोगों को? Anyone have idea what's the shot taking method? How we shoot the scene? और कितने मेथड होते हैं शूट करने के? Anyone have idea? Suppose you have to shoot a scene. So Yeah, how we should means the shooting short method. we should the short division must be done. No, not short division. A method that we can shoot a scene. Suppose there was a scene that Yeah, मैं like यहाँ बैठा establishing and so to shoot the one scene, look, the within one scene there is a many shot, right? Within one yeah, scene there is a many shot. yes. So what happened? Sometimes have you seen that every scene, because you are not shooting in the through the one angle, right? Every time for the every action or different angle you choose different angle, different shot size, right? करते हैं ना? So sometimes what we did, every action you just repeated for the every shots, right? Suppose there was a shot that I will come inside, I will sit on the laptop, I'll start working. So you shoot these things in the master shot. Again, the same action will be repeated in the mid shot. Again, it will be repeated in the like close-up shot. Is it happening or not? ऐसा भी shoot होता है ना? Same action repeated, and you have to shoot it. That's called master take method. Every scene you need to cover from starting to end. That's called master take method, master shot method, right? It's called master take. For everything, the same scene, I will do it for the master. The same scene, I will do it for the mid. Same scene, same action, I will do it for the closer. That's called the master taking method. Another is called triple taking or overlapping, in which in those techniques that action is not repeated. Suppose if I have to walk from there to there, I will walk from there to here, and now I will start it from here to there for another shot. I will not repeat, actor will not repeat the same shot. That's a triple take method and it's called overlapping. But how they manage the continuity, right? How they manage the continuity? Break तो आएगा, jump आ जाएगा ना in triple take method. So there's a rule. So, बस एक line याद रखना. can you Yeah. repeat the second method? Second is triple take method. Triple take method. Yeah. Yeah. In which What's that? we are not repeating the action. Instead, the acting will be paused. Yeah, paused means I'm just telling you pause, but it's not paused. The reason I'm just explaining, you got to know that. You don't need to pause it. But if you have the actor who is not professional, he must have to pause. Because if they are not professional, they will not repeat the same action. So that's the reason as I said the word paused. From where you can start. So the things is that once you started recording one shot, right? In one shot, there will be last frame. Whether that person pause. Suppose this is the action, you said cut, right? So here there will be cut. See my finger, see my eyes. So this shot is your what? This shot is your last frame. Is it last frame or not? This one is last frame. Once you said cut over here, is it your last frame or not? Your last frame है ना तुम्हारा? Yeah, this is the last frame. No, triple take method said कि whatever of your first frame, whatever your last shot of your first frame, last frame of your first shot will be the first frame of your second shot. Are you getting my point? Last frame of your first shot will be the first of your second shot. Okay, so now the editor have the two shots. If the first shot is a wide shot and the second shot is going to be the close one, so how we will notice that, sir? Yeah, you have to pause it. Suppose from wide I am coming from here to there. No.
Suppose I'm coming from here to there, I just sit down on chair and hold my phone, right? To make a call, right? Now director wanted this shot after holding the phone, it should be in close, right? So in wide, you recorded my action from here to there. I'm sitting on the chair, hold the phone, and you said cut, right? Now it's cut in wide shot. Now you have to make it close shot or mid close up shot, whatever. So my last frame was this one. This one was my last frame, right? So now this frame becomes first frame of my second shot. From here I am started, not from here. So whatever your last frame, right, of your first shot, the same action frame means the same action basically. The next frame on the next shot, that will become your first shot. So in editing point of view, do you have the two option or not to match those things? In editing, it will match or not? Yeah, it will be matched. It will match, no? Because the same shot is repeating 2 times. Yeah. One is, so triple take method is very simple. That's why its name is triple take. Key last frame of your first shot will be the first frame of your second shot. The same thing with the last frame of your second shot will be the first frame of your third shot. That's why it's named a triple take method or overlapping. Okay. In That's called editing, the match overlapping. cut. In Yeah. editing, there is a match cut. Analytic is a kind of match cut. Right? That's why it's named overlapping. Instead of the triple take, you can say it's the match cut. Not the match cut, basically overlapping. We are just overlapping the action to get the continuity of it. So there will be no break. There will be no jump at all. Right? So that's a triple take method. It will save your time, but you need professional actor for triple take method. Because as you said earlier, actor will be paused. How it possible? Because for the second shot, it will take time. Right? So that's the reason people are using, if you have the unprofessional actors, we are using what? We are using multi-camera setup. At once we recorded everything by. That's it. But if the actors who are professional theater artists, he know where was the pause, where was the eyes, where was the hand, what was the gesture of it. Many times, have you seen, if you amateur films, you guys can feel that jump in eyes. यार वाइड में ऐसे ही था, सेकंड शॉट लाते ही आंख यहाँ कैसे पहुंच गया, या गर्दन ऐसे था, ऐसे कैसे हो गया. Many times you can feel that things. होता है ना? The reason they are not professional, and you, also camera person, director is not watching those things. That's the thing. So that's a triple take method in which गलती ज्यादा नहीं होगी, आपके कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी. सो दैट्स द मेथड ऑफ शॉर्ट टेकिंग मेथड. सपोज अगर आ जाता है कि क्या क्या मेथड, दैट्स व्हाई आई जस्ट एक्सप्लेन, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है. सो हाउ टू शूट लाइक those things, what should be the method? So either the master take, the every shot will be repeated, or either the triple take method in which you can record it. So triple take का फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? Sir, it's triple take. It's right. Triple take or overlapping. Triple TRIPLE, triple take, or either Okay. overlapping. The Okay. triple take or overlapping. That's it. ठीक है. So कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है. मैंने एक फिल्म का नाम भेजा, और भी फिल्म का भेजता हूँ आप लोगों को. स्टार्ट वॉचिंग दोस फिल्म्स. कैमरा को ड्रॉ करने के नीड अ ड्राइंग, बस ये थोड़ा बहुत बनाना सीख लो, दैट्स ओके. कि कैसे एंगल बनाता है, दैट विल बी ओके, है ना? दैट विल हेल्प यू आउट. ये मैं पीपीटी भेज दूंगा आपको कि was the advantage of single camera setup. Maybe क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने बना दिया. You guys know that was the advantage of single camera setup. क्या क्या होता है सिंगल कैमरा सेटअप का? यानी वन बता दीजिए. गौतम, what is the advantage of single camera setup? So the lighting and the continuity, everything will be what can we say? Well focused in. Bit more focused, you can say that. More focused in the sense because the either director or camera person will be on one camera. That's the reason it will be more focused. But in terms of lighting, maybe it will be changed because it's not fixed. But in terms of flexibility, is there. You can shoot from any axis,
right? But in multi-camera setup, many things that you need to control, because one camera should not come as another camera. इस कैमरे में वो नहीं आना चाहिए, इसमें वो नहीं आना चाहिए. So you are not able to manipulate those things in multi-camera setup. There is certain limitations, right? Light आने के टेंशन होते हैं, वो होता है. But for the single camera setup, it will take time, but whatever you want, you can do it. But that's the flexibility basically, right? And whatever you said, it will be more focused. Because if there are three camera, director तीनों में जाके नहीं देखेगा. Well, that's another thing. There is a village, monitor village, call this पे सब camera दिखाई देता है. But precisely if you are watching only one action, or same time you are watching three actions, it's very difficult to judge those things. So that's for the artistic purpose. That's why multi-camera is not for the one camera. So it's totally depend upon how you are explaining. ये sequential shooting है, flexibility है, efficiency in editing है, cost effective है, obviously. Cost effective इतना पैसा नहीं जाता है. मल्टी कैमरा का अपना है कि एक ही टाइम पे शूट हो रहा है, लाइव इवेंट में ज्यादा काम होता है. कंसिस्टेंसी इन लाइटिंग एंड सेट डिजाइन रहेगा ऑब्वियसली. समटाइम्स यू आर यूजिंग अ सिंगल कैमरा सेटअप, सेम चीज नहीं हो सकता है. यू आर अल्टरिंग समथिंग, मे बी द थिंग्स हैव बीन चेंज. क्विकर प्रोडक्शन फॉर सम कॉन्टेक्स्ट, तो जल्दी हो जाएगा ऑब्वियसली. अब डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स लाइटिंग हो जाएगा, सेट डिजाइन हो जाएगा, राइट? बड़ा एरिया चाहिए आपको, टॉप की लाइटिंग करनी पड़ेगी या दूर से लाइटिंग करनी पड़ेगी. तो मेरी जो भी, लुक, इट्स वेरी सिंपल थिंग्स, बट द थिंग्स इज दैट if you have faced those things, you know that exactly what is the problem and give the technical name of it, right? एक lighting complex हो रहा है ना, yeah, whatever the problems that you are facing. Hmm. Hmm. So एक सेकंड, हेलो, एक सेकंड. Sorry. So these are the point guys, जो इसमें मैंने लिख दिया है कि क्या क्या होता है, लिमिटेड एप्लीकेशन, इंस्ट्रक्शन पर्सन, ये जो भी है ना. I'll send this PPT, but it's very simple कि whatever you feel you can write it down. आप उसको लिखो, that's okay. तो कुछ भी, because it's not technical, there is no mathematical calculation कि a plus b का whole square है. It's totally observation, what you feel, just write about it right now. तो जो ये पीपीटी भेज देता हूँ. एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस वांटेड टू आस्क मी, और कुछ भी ऐसा है तो यू गाइस कैन सेंड मी, टेक्स्ट मी. हो सकता है कभी बिजी हूँ तो ना दूं, बट रिमाइंडर डाल दोगे तो आई विल जस्ट हेल्प यू आउट. कुछ भी ऐसा है. एंड दिस जर्नी वाज गुड अभी तक का जो हम लोगों का रहा है, एंड आई होप एवरीवन कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओ, है ना. 1 ईयर 3 ईयर कुछ भी हो, एनीवेयर. So that's a good key. You guys are basically, you guys are fortunate. In the 1 year, you guys can appear in 3 exam. है ना यार, 3 एग्जाम दे सकते हो in terms of cinematography. Yes, sir. Yeah, three. Yeah, so you guys are fortunate. ये तुम लोगों के लिए हुआ है. So literally, अभी तो 10 सीट समझो कि 10 सीटें बढ़ गई ना. 10 seat is more. Instead of 10, you have 20 seats in electronic cinematography. Now think about it. So you have chances, have more chances. So go to it and crack it, guys. All the best. कुछ भी हो, anything that you wanted to ask, कभी पिन करो मुझे, टेक्स्ट करो, मेल करो, I'll be there. And Thank you, sir. Thank you very much, sir. welcome dear. Welcome dear. I'm sharing these things, also sharing the film's name in group. Okay. और अभी एग्जाम से पहले नहीं देखना है, अभी वो फिल्म कल जाके नहीं देखना है. कल टेक रेस्ट, रिलैक्स करो आराम से, रात में बहुत रात तक नहीं पढ़ना है. इट्स वेरी सिंपल. डोंट रीड
लेट नाइट, गो अर्ली इन द बेड ताकि बहुत जल्दी आराम से उठ के सेंटर पे जा सको। रीड क्वेश्चंस केयरफुली इन एमएसक्यू और एमसीक्यू। एमएसक्यू में ध्यान से पढ़ना कम से कम 2 बार। मेनी टाइम्स द क्वेश्चन आंसर वाज हिडन इन क्वेश्चन। रीड क्वेश्चन केयरफुली 1 or 2 times, मे बी 5 मिनट ज्यादा लग जाएगा, दैट्स ओके, बिकॉज मल्टीपल सेलेक्टिव वही तो है कि आपका दिमाग कितना चलता है, हाउ मेनी आंसर दैट यू नो, दैट्स द थिंग्स। तो थोड़ा सा एमसीक्यू से पहले एमएसक्यू कर लेना सॉल्व, ठीक है, क्योंकि एमएसक्यू में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एमसीक्यू हैव द वन आंसर, उसको भी केयरफुली देखना है, बट अगर तुम्हें पता है तो यू नो द आंसर्स। बट रीड क्वेश्चन केयरफुली फॉर द एमएसक्यू और एमसीक्यू। क्वेश्चन बहुत केयरफुली, सब्जेक्टिव भी है, अब पढ़ो। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कहा है कि यू मस्ट हैव टू आंसर इट, देख लेना, शायद लिखा होगा, बट पढ़ लेना वहां पर भी इंस्ट्रक्शन में। यू मस्ट हैव टू आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, डोंट लेफ्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिख के तुम सिर्फ 4 का आंसर कर दोगे, वो नहीं होगा, वो देना ही पड़ेगा, पहले का आंसर कंपलसरी है, वो आपको देना ही पड़ेगा। दैट्स द थिंग्स, दैट्स ऑल। कुछ भी हो तो पूछिए। एंड थैंक यू एवरीवन, Thank ये you, sir. सफर अच्छा Thank रहा। you so much, sir. बिफोर 3 year exam Thank you, sir. once I will connect you guys definitely, and after exam just text me how was it, जो Sure, रिपेयर sir. हो रहा है, ठीक है। Sure, sir. Sure, sir. Sure, Okay. sir.